Hi, good evening, all of you. We will continue with now the second half of transition elements topic now, and we will be taking the property of oxidation state just connected with your ionization enthalpy, which we completed last time. Both the properties, of course, are connected. So let us begin with oxidation state. Now, oxidation state is that particular positive state here, which is shown by transition elements. Now, we have been seeing here that in transition elements, it such happens that almost all the elements are going to show multiple oxidation states, except group number 12, which we saw even last time as an exceptional case. So elements like zinc, mercury, cadmium, they will show mostly only one stable oxidation state, while all others are going to show multiple states. Now, what's the reason for it? Let us check that. So the reason for this is found to be that they can lose electrons from the outermost ns orbital as well as the previous n minus 1 d orbital. So for example, in case of transition, first transition series, they can lose electron from 4s as well as 3d. So when I say n minus 1d, it's a 3d orbital, ns is 4s orbital. Energy wise, if you see, the energy difference between ns and n minus 1d is extremely tiny. In fact, that is the reason why electrons can jump from 4s to 3d or even 5s to 4d, and they can show the special configurations also. So the promotion needs very less energy, and that is why the elements can lose electron from 4s as well as from 3d. That is why many oxidation states are shown by these elements. Now, not to just say many oxidation states, let us prove what are the states they show. So when you see these elements like 21 scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc. So what is the configuration we will see? It's 3D1, 4s2 for scandium, 3D2, 3D3. If you remember in chromium, there is a shift happening, 3D5, 3D5 again, 4s2, 6, 7, 8, then comes 10, 1 and 10, 2. Now, if you see here, when they lose electrons, what is going to happen is each and every element can lose the last 4s electron. So here 4s2, here also 2, here also 2, here 1, here also in copper 1, and rest everywhere 2. So the lowest oxidation state shown will be what you see here as the number. Moreover, along with this, it can lose the next also. So what will be the state, oxidation state scandium can show? Plus 2 and 2 plus 1, that's plus 3. So suggesting is not very difficult. You know, you can lose 4s2 as well as 1, so total 3. Try doing it here. 4s2 will lose, so plus 2. Then from 3d2, 1 can be gone, so 2 plus 1, 3. And then the second also is lost, so 4. Same way for vanadium, we can predict 2, then plus 1, 3, plus 1, 4, and plus 1, 5. The question is, some of them might be stable, some of them might be unstable. We are not going into details of which are the stable and unstable states. That much they don't ask in exam. Chromium has one small exception. The expected plus 1 state is a little unstable. So it begins from 2 itself. So it goes like 2, 3, 4, 5. 5 plus 1 is going to be 6. Manganese once again 2 and going up 2 plus 5. So it will go for plus 2 to plus 7 all the states. Now when you come to iron, the things are going to be a little different. Now instead of just showing you the states and everything, let me just draw a small diagram and show it to you. Perhaps you will understand little easily. So imagine this with iron, what happens? Remember the configuration is
Here 3d6. So in case of iron, if I show this way, so this is 3d and this is 4s. So our configuration for Fe is 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 2 over here. So when it loses 2 electrons from 4s, the oxidation state will be +2. Then 1 electron from 3d will be lost. That will make it +3. So that's why we have for iron ferrous +2 and then ferric as +3. Think over it. When 2 electrons are lost, 4s orbital is empty. When +3 is there, it's going to be this way. You can see in +3 there is 3d5, that is called the famous half-filled state created. Now, Fe onwards, all the elements we need to learn this way. And we cannot lose electrons, all of them, as we used to do till manganese earlier. So this is 26. Let us try same way for 27 and check in this manner how the electrons can be lost. What are the possible oxidation states? So it's going to be this way. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So 3d7, 4h2, that is cobalt. So let us try this. 2 electrons from 4s, you will get +2 state of cobalt. 1 electron from 3d, +3 state. So let us say this one I am targeting first. And then one more electron from 3d, that will give you +4. So we are targeting this one. So if you see now configuration at this moment, this will be 3d7, this will be 3d6, and this will be 3d5. On this, they ask you question in exams about stability. So I hope everyone can understand. Cobalt +2, less stable than cobalt +3, less stable than cobalt +4. Is everyone clear about this whole concept? How to delete electrons? 4s, 3d, and in 3d also, whenever we are deleting, you have to remove the electron which is going to be the paired one, so that you can get half-filled orbital, and go on doing it till the last state where you get 3d5. So Fe onwards, everywhere, we need to do this particular strategy to get the electrons and stability order. Right? Please take a screenshot of this. So with this knowledge, let us come back to this one. And now perhaps you will understand +2 and +3. Now iron shows two more states which are extremely rare states called +4 and +6. Now these states are only seen in very, very special conditions. We will see them on the next slide also when +6 state comes. So right now, not talking about +6 here. Same way cobalt, just now we did 2, 3, 4. Here it will be also 2, 3, 4. Copper 1 and 2, and zinc alone +2. So basic summary of this table is most common oxidation state is +2 because it's loss of 2 electrons from 4s, with one exception only of copper showing +1. Lowest oxidation state is due to the loss of electron from 4s, and highest is due to the total electrons of 3d and 4s. You will also observe when you go cobalt onwards, nickel, copper, zinc, especially cobalt, nickel, copper, they cannot lose all the electrons because loss of 7, 8 electrons is practically impossible. So it stops mostly up to the half-filled oxidation state. Right? You need to remember this table by heart. Especially they can ask you
give reason kind of statement questions. Why so and so state is stable. So whenever there is a question of why so and so state stable, you have to write configuration of ground state, then the configuration of oxidation state, and just check whether it is empty, half filled, or completely filled. And that will be your reason. Let us go ahead. We'll talk more about these states that whenever you select an element and you see that it has shown a very high oxidation state, that mostly happens when that element is connected with either fluorine or oxygen. With other groups like nitrate, chloride, and all, they don't show very high oxidation states. For example, you can see here in other series, not in 3D, but 4D and 5D, plus 8 is found to be the highest state. That is shown by ruthenium and osmium. But they also show this state only when it is the oxides of ruthenium and osmium. Otherwise, in all other states, they show small oxidation numbers only. In this particular series, manganese is showing +7, chromium is showing +6, and that also you can observe it's only in their corresponding oxides. So permanganate and dichromate, they show very high oxidation states. So, हाँ बोलो. so why doesn't nickel show even +5? Which one? Nickel. Nickel. Let us try this. Nickel 3D8 4s2. So configuration is 3D8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 4s2. So 2 electron loss from 4s, it will create +2. 1 electron from 3D each now, it should create +3. We are targeting this electron. Then goes for +4, we target this electron, and we expect one more state over here. But this doesn't happen. Anyone can think of the reason for this. What must be stopping it for losing the next electron? Very simple reason. Nuclear charge. Correct. So indirectly, which factor are we talking over here? Atomic What radius. radius? Atomic radius. See, हम लोग ने scandium से चालू किया. Scandium is here. Zinc is over here. Atomic size देखो. So उसके पहले copper और उसके पहले nickel. So you know when you are going here, recollect atomic radius में हम लोग ने किया था. Scandium से लेके copper तक atomic size reduce हो रहा है. फिर zinc में थोड़ा size large हो जाता है. So copper and nickel are going to be very small atoms. So loss of so many electrons is practically not possible. So although theoretically we feel it's going for a half filled state, reality में ऐसा नहीं होता है. It stops at a certain level only. Got it? And copper also should stop at 3D10 now because हाँ, 3D10 yes, is yes, yes. जिसको इनका screenshot लेना ये लीजिए. Then I will explain copper thing. I'll tell you why it shows that way. Yes. See, copper का original expected configuration क्या था? 3D9 4s2, and after shifting it becomes 3D10 4s1. So what scientists suggest that this query, this is a query universally asked in for scientists when they discovered this. What they suggest is this 10th electron which is being transferred over here, distance between 3D and 4s energy level is so tiny that it almost, that 10th electron belongs to almost both the orbitals. मतलब ऐसे है कि जैसे दोनों के बीच में हैंगिंग है. And whenever needed, this electron is gone. And when it comes to the turn of losing another electron, this electron also is lost. Because that electron which is losing is actually belonging to 4s only.
and just because of the completely filled state, it has been transferred over there. So वो electron है 4s का ही. So that's why loss of electron is possible. Practically speaking, दोनों में से, लेकिन theoretically वो electron 4s का ही है. That's why +1 and +2 both are seen. This cannot be compared with 30 zinc, which is legally 3d10 4s2. तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा यही जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं जाएगा because it is completely filled. Got it, everyone? So this is because of the special configuration of copper, transfer of electron which is happening. Right? This only happens during the transition to 3D10 or even 3D5 also. No, 3d5 this is not found at all. In fact 3d5 में अगर देखोगे आप लोग टेबल, तो +1 स्टेट है ही नहीं, देखो वहां पे. So here also perhaps ये 5 भी इसका ही था, और देखो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया. Got it? Isn't it a similar thing? Yes, sir. So जो इलेक्ट्रॉन हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन में शिफ्ट किया था, वो शायद अंदर से अंदर 4s से ही बिलोंगिंग था. Only for stability it is perhaps transferred over there. This we had seen already, higher oxidation state. Now we come to that special state of iron which I showed you. आप लोगों ने शायद 8-9 स्टैंडर्ड से सुना है कि आयरन का स्टेट हमेशा फेरस और फेरिक, ये दो ही होता है. But this is a very special one called +6. And the compounds where +6 state is seen are called ferrate compound. Ferrate. Spelling देख लेना, Ferrate. There is some other English word called ferrate, different spelling. In ferrates, the state we have seen is +6. And +6 में देखो configuration हो रहा है 3d2. अभी ये ऐसा configuration है जिसमें कुछ भी stable, special नहीं है. Neither it is half filled nor empty, but still iron can show that particular thing. इसका एग्जाम्पल है बहुत फेमस कंपाउंड पोटेशियम फेरेट. The only reason what they have found out is due to presence of oxygen. Oxygen is so much electronegative element that it can force iron to lose extra electrons and it can become a +6 state. आयन का दूसरा कोई भी एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है जहां पे आयन +6 रहेगा, एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर फेरेट स्टेट. So ferrate मतलब कौन सा है? FeO4 is the state called ferrate state. FeO4 -2. Right? We are not doing any more details of ferrate more than this. Only this much. These are the two tables of other oxidation states. These are the most stable ones I have given. There are, like for example, ruthenium you can see here, which is going for +8 state. Osmium में वो maximum +6 में ही जाता है. सिर्फ OSO4 में +8 as a special state it shows. Otherwise, these are the usual common states which are there. HSC students, this table is both these tables are not there in GTB. Only in JEE and NEET syllabus you need to do this part. So this was all about the property oxidation state. Based on oxidation state only, we go for a magnetic property now. अभी ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ करेंगे वो हम लोग को फिर से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी रिक्वायर्ड है, तो थोड़ा पॉइंट्स याद रखना. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में substances show magnetism basically because of electrons. Whenever you have a single electron and it is revolving around nucleus, we say magnetic property is created, magnetism is created. Standard conditions, two magnetic properties are seen: diamagnetism and paramagnetism. Besides this, there is a third case known as ferromagnetism, and this is found to be an extreme case of paramagnetism itself. So ये ferromagnetism mostly scientists separate case नहीं पकड़ते हैं, they consider it under para only. If you see physics books of magnetism and all, they consider all the three properties. And for ferromagnetic substances, even they have developed a theory also known as domain theory and all. Have you all done physics में magnetism topic? Domain theory किया है क्या अभी तक? No, sir. No, sir. Okay, No, sir. so you will be doing that theory under physics.
We will be doing it a little bit of it when in the next week we begin with solid state. सॉलिड स्टेट में ये मैग्नेटिज्म फिर से आएगा, तभी हम लोग ये फेरोमैग्नेटिज्म का थियरी जो आपको फिजिक्स में वो यहाँ पे भी केमिस्ट्री में करेंगे, बट इन लेसर डिटेल, नॉट एज mathematical details like physics. So this magnetism, let us see now in detail. Diamagnetic substances are those which are weakly repelled by applied field. They are actually repelled. The reason for this is they will have pairs of electrons. Simple language, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे. That is called diamagnetism. Examples I'm showing now, these examples are not only from D block, it's like general information given. Paramagnetism will be, they will be attracted towards magnetic field and they will have few unpaired electrons in them. Usually up to 4 unpaired electrons are considered to be paramagnetism. 5 and more than 5 are going under ferro. So examples in this topic like copper plus 2, Fe plus 3 and so on. Then ferro, strongly attracted, and moreover they are like permanent magnets. So examples we know, it's iron, cobalt and nickel. They are ferromagnetic substances. Now usually they ask you in exam to calculate the magnetism. This part we had done under 11th standard structure of atom topic, but I'm just taking 1 or 2 examples here. Simplest I will take is iron. One example I think is enough to understand for everyone. This is 3d6 4s2, and now we are making it into Fe plus 2, which will be 3d6 4s empty, and Fe plus 3 is going to be 3d5 and 4s 0. I hope everyone understood this, how I have written it. मैंने इलेक्ट्रॉन को कैसे डिलीट किया, सबके समझ में आ गया correctly, no problem in that. Let us calculate now the number of unpaired electrons in this, number of unpaired electrons. Can anyone tell me what will be the number of unpaired electrons here in every case? 4. Okay, जिनको थोड़ा डाउट है उनके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ. This is 1, 2, 3, 4. So this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So you can see unpaired electrons are 4 over here. Again 4. Here also it's going to be 4. 3. यहाँ पे हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन को sorry. डिलीट किया. So 5. this will be 5. 5. राइट. अच्छा, जो लोग अभी कहीं पे भी बैठे अपने रूम में, कहाँ पे कहीं पे बैठे हो, ओके, डू वन थिंग विथ मी. राइट, जब मैं क्लास में होता तो आपको ये सामने करके दिखाता था, बट डू इट विथ मी. ऑल ऑफ यू ओपन योर palm and keep 5 fingers in front of you. Do this exercise with me. I hope nobody is Ritik Roshan in the class and everyone has only 5 fingers. Right? When you want to, ready everyone? When you want to count 3d6, okay, what will you do? Watch. Go on folding your finger one by one. So first finger, second, third, fourth, fifth and sixth के लिए आप लोग फिर से एक फिंगर ओपन करो. अभी आप लोग इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो. So what you did was something like this. This is your thumb and these are your 5 fingers. Okay, don't go on my drawing. So when we are counting 6 electron, what you did, you counted 1, 2, 3, 4, 5. For 6th one, you closed this finger. How many fingers are remaining? That is number of unpaired electrons. आप एक्चुअली लिटरली आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो. सो वंस अगेन अनदर एक्सरसाइज. हम लोग 3d8 को करके देखते हैं. 3d8 के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज योर फिस्ट. बंद करके रखना, मुट्ठी बंद करके रखो. और अभी आप लोग गिनते जाओ. ओपन करो फिंगर एक एक इलेक्ट्रॉन को 8 तक. दूसरा हाथ यूज नहीं करना है. सो 1, 2, 3, 4, 5. नाउ स्टार्ट क्लोजिंग. 6, 7, 8. कितने फिंगर्स ओपन है आपके अभी?
2. That is number of unpaired electrons in 3d8. ये आपको बॉक्स वगैरह ड्रॉ करके कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. Is this understood everyone? Perfectly clear, right? You can try any way like this and you will get. For example, आप अगर copper +2 कर रहे हो, so it is 3d9 4s0. So use this method. Close your fist, 9 count करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. How many electrons do you get? 1. 1. One unpaired electron in copper +2. ट्रिक समझ में आ गई सब लोगों के? कैसे काउंट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब काउंटिंग, क्योंकि ये आपको फिर से एक्टिनाइड्स लैंथेनाइड्स टॉपिक में भी रिक्वायर्ड है. Sir, हाँ बोल. sir, can we minus the number by 10? You can Yes, do sir, that. directly. You can do that. Yes. sir, directly. What is that number 10? Can anyone tell me? D10. Number of अरे electrons. D का total capacity. That will give you the answer. Correct? Yes, sir. Okay, चलो next one. अभी इस पे ये हम लोग ने क्यों किया था? Now from this number of unpaired electrons, we are going to find the magnetic moment of the electron. I'm not sure whether you heard of magnetic We've moment done in this physics. before, right? हाँ, Uh, pardon? We've done this in structure of Absolutely. वही तो repeat कर रहा हूँ. Correct है. You the at least one understood student the remembered. formula. Root of n plus 2. This is magnetic moment. So अभी आपके पास अगर 4 unpaired electrons है, so your n value is 4. So this is root of 4 into 6 root of 24. यहाँ पे भी वही आएगा same root of 24. Here it is going to be root of 5 into 7 root of 35. Is this clear how to calculate? We had done all these things in atomic structure topic. वही हम लोग repeat कर रहे हैं और कुछ भी नहीं. So considering this whole part now, this is the table. Okay, we'll be doing first is this. The formula which I'm giving here. Now this magnetic moment which we calculate is due to two things. Number one, spin angular momentum. What is spin angular? Magnetic moment which is created due to the spinning of the electron. So if you recollect the simple magnetic, simple atomic structure, we know that there is a nucleus in the center. There is an electron which is revolving around itself, either clockwise or anti-clockwise. Correct? So this particular movement, what you see here, is the spinning motion. Plus half and minus half हम लोग spin quantum number को लिखते हैं. Then we have the movement of this electron around nucleus, which they call as orbital movement. So spinning की वजह से जो magnetic field create होगा, that is called the spin magnetic moment. That is mu. और इससे जो होता है that is orbital. So reality में जो magnetic moment create होगा वो ये दोनों का total रहता है. अभी ये जो spin angular momentum है ये एक vector है. Orbital momentum is also a vector. So by the vector addition of these two, they find actually the real magnetic moment. But that is a bit of a complicated calculation. So in our syllabus, we are only going to do the spin motion magnetic moment. So कभी भी आप questions देखोगे ना इसका, तो ये word आपको हमेशा दिखेगा. Spin only magnetic moment. तो हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपने सिलेबस में है ही नहीं. Not even in our JEE or NEET or any syllabus also, because it's a bit complicated job. So based on this now, we have the table here. And this is a shortcut. Perhaps I had given this also earlier to you, but अभी by heart करके रखना. जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, so value आप लिख सकते हो 1.73. When it is 2, 2.84, 86, 3 के लिए 3.87, 4 के लिए 4.92, 5 के लिए 5.92. This is a textbook table where theoretical and a little bit sometime observed values are given. We don't have to bother for that.
whatever are calculated, ये जो वैल्यू का टेबल है लेफ्ट साइड वाला, बस आप उतना ही याद रखो और उतना ही कैलकुलेट करो। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको एग्जाम में, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर क्रोमियम +2। तो आपको क्या आंसर देना है, 3d4 निकालो आप कैलकुलेट करके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4, आंसर लिखो 4.90, बस दैट्स ऑल। लास्ट ईयर 2 साल से जेई और नीट में भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेरी वेरी सिंपल एंड स्कोरिंग क्वेश्चंस, राइट? एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? ये जो हम लोग स्पिन ओनली कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ये सिर्फ 3D सीरीज के लिए एप्लीकेबल है, बट व्हेन यू गो फॉर अदर सीरीज, वो जो नीचे वाली सीरीज है वाइट्रियम वाले, लैंथेनम वाले, या फिर लैंथेनाइड सीरीज, they will not give you correct answers because there the configurations, atomic size are so complicated. We have to use orbital momentum for that, और वो सब फिर अपने सिलेबस के बाहर जाता है, इसलिए उन्होंने इनका डिटेल आपको नहीं दिया है। मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर always temperature dependent because there are some cases where due to higher temperatures electron number may fluctuate and diamagnetics sometimes become ferromagnetic, para may become ferro, ferro may become para, such things can happen. You will study this under physics. There is one phenomenon called Curie temperature in physics, you will study where such temperature related stuff is done. We right now don't have any such details. We go for next property, that's color. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है and many times they have asked questions on this, but पहले हम लोग थियरी करेंगे, then we'll see a table of colors. Whenever you know already that a substance is colorful, that means it has absorbed a little portion of the visible light and it has given out certain wavelength. The theory of color says that whichever wavelength is absorbed, there is an opposite wavelength emitted. अभी ऑपोजिट को वो लोग वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, स्पेलिंग देख लेना, PLEME, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, जो गिफ्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहता है दैट इज PLIM, दैट्स अ डिफरेंट स्पेलिंग। टू अंडरस्टैंड दिस, अ साइंटिस्ट कॉल्ड अल्बर्ट हेनरी मंसेल डिस्कवर्ड ए कलर व्हील। अब ये जो कलर व्हील है ये बहुत जगह वर्ल्ड में यूज होता है, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री। So what is this Munsell wheel is like this? He suggested that a wheel looks like this. अब ये wheel उसने कैसे create किया समझ लो। He has used 7 colors, but not all 7. He has skipped one. You can see here. Violet, indigo नहीं लिखा है, और देखो बाकी के 6 कलर्स आपको मिलेंगे। So violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So his theory is like this. Whenever any substance absorbs violet wavelength, the substance color will be yellow. If a substance absorbs blue wavelength, its color will be orange. When a substance absorbs green wavelength, the substance color will be red. So you can see this. These are the 7 colors. Indigo is on boundary of 2, so he has ignored it. So violet to yellow, blue to orange, and green to red. Any doubt up to this part? अभी ये basic color theory हो गया. We will see how d block elements can show colors. Let us go in details of that. So as we know, there are 5 d orbitals present. What are they? They are dxy, yz, zx, x square minus y square, and dz square. Imagine there is one electron present in these orbitals. So कोई atom है, इसमें d1 is the configuration. Whenever an atom forms a bond, these d orbitals are found to be splitting into 2 levels. That's known as crystal field splitting. So 3 orbitals are at lower level, 2 orbitals are at the higher level. The theory of this, why this happens, we are going to do in the chapter of coordination compounds. Next,
Now the electron which was over here now will be coming over here in this state. So ये दो क्या स्टेट है पहले प्रॉपरली समझ लो. ये जो स्टेट है ना पहले का, this is a state of orbital when atom is not forming a bond, and when orbital forms a bond it split like this. इमेजिन करो अभी हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. सो वी आर गिविंग सपोज all the 7 wavelengths to it. So simple Bohr's theory, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा and it will go to the higher energy level. It cannot stay over there. It will come back and give out the energy which it has accepted. Jumping of electron from one d orbital to the other is called dd transition. अभी ये जो वेवलेंथ बाहर एमिट हुआ है, that depends on what is the difference of this energy splitting. और वो splitting difference हर एक आयन में अलग होता है. +2 का अलग, +3 का अलग, +4 का अलग. That is why every ion has a different color. So when it returns back, we see the color at that time. You can see these 3 points on your own, very simple ones. When the colors are possible, when the transition metal ions have incompletely filled d orbitals. अगर completely empty है, d0, color is not seen. d10, color will not be seen. So you can imagine now, perhaps if you remember from last lecture, zinc compounds are colorless. मैंने बताया था zinc sulfide, zinc sulfate. The reason now it's clear that zinc has d10 configuration. अभी पूरा का पूरा आपका ऑर्बिटल फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कहां पे करेगा? तो इसके लिए उसको dd ट्रांजिशन करने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो कलरलेस रहेगा. You can read these points also, which is just an extension of these. And based on this, now we go for the color table. This is really a little task for you to remember so many colors. 3D0, 3D0, 3D1, 3D1 vanadium, a different color. 3D2, 3D3, 3D3 chromium, 3D4 manganese, 3D4 chromium, 3D5, 3D5. I have tried to incorporate the best possible colors which are available on the PowerPoint just to match with those colors. But the shades might be a little different when you see it on your screen. When you see perhaps later on in the PDF, colors might differ a little bit. लेकिन So ये पूरे के पूरे टेबल आपको बाय हार्ट करने हैं. Bad news. Number the configuration, right? Yes, it is based on configuration. So configuration exam में mostly नहीं आता है. They ask you chromium +3 has which color? Violet. That's all. ये आपको याद रखना है. Configuration खाली मैंने sequentially डाला है. देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5. आगे मैं जाऊंगा 6 पे. So I have tried to make it configuration wise. You can remember it color wise any way you want it. लेकिन ये tables आप एकदम याद रखना बहुत important है. And even in CET, JEE, NEET, HSC, everywhere they have asked questions on it past exam में. Now we have 2-3 give reasons based on this. हाँ बोलो. So why do some compounds, even though they have like the same orbitals, like 3d5 and 3d5? That only depends on the this one अपना जो नीचे का ऑर्बिटल और ऊपर का ऑर्बिटल था ना, उसके एनर्जी डिफरेंस पे रहता है. और जब 3d6 और 3d7 है, तो हर एक एलिमेंट का वैल्यू अलग होता है सबका. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 3d6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन Fe का और कोबाल्ट का वैल्यू अलग रहने वाला है. दैट्स व्हाई कलर्स आर डिफरेंट. माइन्यूट डिफरेंस रहता है, लेकिन डिफरेंस डेफिनेटली रहेगा. एनर्जी डिफरेंसेस आर देयर. So sir, in this case, in 3d8 and 3d6, we have same energy levels. नहीं, ये ग्रीन हम लोग जो लिखते हैं ना ग्रीन, ये अपने लिए रफ है.
रियलिटी में ये वेवलेंथ अलग होता है, समझा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्रीन है और उसका वेवलेंथ है सपोज लेट अस से 700, तो वो यहाँ पे ये वाला शायद 700.3 हो सकता है। तो रियलिटी में बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। अपने आईज के लिए वो ग्रीन है, हम लोग देखेंगे तो ग्रीन लगेगा, लेकिन रियलिटी में वेवलेंथ में नैनोमीटर में छोटा मोटा डिफरेंस हो सकता है, होता ही है, मतलब इट्स नॉट इक्वल। सो डोंट इमेजिन ये कोबाल्ट का +3 का ब्लू और कॉपर का ब्लू बिल्कुल सेम नहीं है। हैव यू सीन एनी टाइम समथिंग नोन एज कोबाल्ट ग्लास इन लेबोरेटरी? देखा है कभी? No, sir. नहीं देखा है अपने को। ये स्कूल में, मतलब शायद कॉलेज में तो गए ही नहीं आप लैब में। School, स्कूल so में we भी have not done anything that. वेरी गुड नाइस। मुझे मिला तो मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा। कोबाल्ट ग्लास करके है, और कॉपर सल्फेट का कलर कैसे, आपको पता है कॉपर सल्फेट का कलर कैसे दिखता है? और कोबाल्ट ग्लास इज लाइक डार्क ब्लू। तो दोनों दिखने के लिए ब्लू है, लेकिन कलर्स अलग होते हैं। ओके, आप लोग खुद इंटरनेट पे देख सकते हो, अभी मत देखना, टाइम पास करना। Sir, copper कोबाल्ट sulfate ग्लास, is light bluish crystal, right? इट डिपेंड्स ऑन हाउ फ्रेश इट इज। फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो थोड़ा डार्क रहता है कभी कभी, और लेकिन टिंज एकदम अलग है। कोबाल्ट का जो टिंज है ना ब्लू का, वो कॉपर से एकदम अलग होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग ये सिंपलिसिटी के लिए ब्लू लिखते हैं, ग्रीन लिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली अलग होता है, शेड्स आर डिफरेंट। अच्छा, मैंने जो आपको मुनसेल व्हील दिखाया ना, वो आपके लेवल के लिए सिंपल वाला है। आप कभी बाद में इंटरनेट पे कलर व्हील डालो वर्ड, और देखना ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसमें आपको बारीक बारीक शेड्स भी मिलेंगे, और वैसे वाले कलर व्हील्स आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं। It is at the back of drawing books and all. हाँ करेक्ट, वो देखो आपको मैंने दिखाया वो खाली यहाँ 6 कलर वाला था, आपको तो 50 कलर वाला भी कलर व्हील मिलता है। दैट इज ऑल स्टार्टेड विद दिस वन, एंड नाउ इट हैज गॉन टू वेरी हाई लेवल, बट वी आर नॉट डूइंग दैट मच डिटेल इन आवर कोर्स। चलो अभी एक 2-3 हम लोग को थोड़ा गिव रीजन क्वेश्चन है कलर बेस्ड। फर्स्ट वन, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, बट सपोज यू ऐड HCl इन इट, उसी सॉल्यूशन में उसका कलर हो जाता है येलो। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? Color is due to the presence of the configuration, and also due to the groups which are connected. Connected groups are called ligands. For example, when copper is dissolved in water, it forms a complex with a formula CuH2O6. This has an octahedral geometry और उसका color है blue. But when we add HCl in it, ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला चेंज करता है। अभी ये हो गया टेट्राहेड्रल, और इसका कलर हो जाता है येलो। सो देखो क्या क्या फैक्टर्स, हम लोग एंड में उसको समराइज करेंगे, तो आप लोग ध्यान में रखना क्या क्या फैक्टर थे। नंबर 1 वाज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2, शैल आई गो ऑन लिस्टिंग डाउन, अपडेट करते जाते हम लोग जैसे हम लोग फैक्टर लर्न करेंगे। फैक्टर्स affecting color of D block elements. This is not a universal answer, it's only for D block. तो अभी हम लोग ने पहला फैक्टर देखा, presence of unpaired electrons. Number 2, because of unpaired electrons, DD transition happens. Lower orbital D से higher orbital D में jump करेगा. Third one, geometry. टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल चेंज हो गया, कलर चेंज हो जाएगा। राइट, यहां तक ठीक है? यहां तक हम लोग ने इतने फैक्टर्स देखे। गो थ्रू दिस, गिव रीजन आंसर। नेक्स्ट फैक्टर और एक करेंगे इसके बाद। The formula also, no? Formula is taking into consideration this octahedral geometry, 6-4 geometry change हो गया। Okay, sir. अभी ये एक थोड़ा सा अलग आंसर करेंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन इट सेपरेटली, एंड आई वांट लिटिल हेल्प फ्रॉम यू। MnO4 -1, this is a famous permanganate ion. Anybody knows पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है? KMnO4 डार्क पर्पल, डार्क पर्पल। ऐसे आपका अगर लैब में लाइट कम है ना, तो वो ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का दिखता है, इतना पर्पल रहता है वो सॉल्यूशन वाइज। राइट, चलो अभी
थोड़ा ध्यान देना इस आंसर पे, इट्स अ वेरी ट्रिकी आंसर. रिकलेक्ट मैंगनीज, ये पर ऑक्साइड परमैंगनेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2. So 4 oxygen will have a state of -8. So manganese oxidation state is going to be +7. Now let us go back and check manganese का configuration क्या था. Manganese atomic number 25. So it is Ar 3d5 4s2. Can you think right now Mn+7 will have what configuration? So colorless. 0 and 0. So what is the expected color of this? Colorless. कलरलेस. लेकिन अब भी आप लोगों ने ऊपर देखा कि इसका कलर है डार्क पर्पल. तो कोई मैच ही नहीं है, अपना थियरी इधर फ्लॉप हो गया पूरा. हम लोग सोच रहे हैं 0 है तो कलरलेस होगा, डीडी ट्रांजिशन होगा ही नहीं. एवरीथिंग इज राइट, ऑल राइट. यहां पर अपना चौथा फैक्टर आता है जिसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर. एंड दिस वाज इन फैक्ट डिस्कवर्ड विद दिस एग्जांपल ओनली. जो मैं अभी दिखा रहा हूं यही मैच नहीं हुआ, इसके लिए साइंटिस्ट को ये उसका अलग सॉल्यूशन ढूंढना पड़ा. व्हाट इज दैट? अंडरस्टैंड. MnO4 इज लाइक दिस. इट्स अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो ये है MnO4 का स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल. चार्जेस देखो, मैंगनीज +7, ऑक्सीजन -2 individual. Now what they found out was something very unique. In this case, as the name suggests, charge transfer, oxygen is found to transfer an electron momentarily, temporarily, for a very short period of time to manganese +2. अगर उसने ये ट्रांसफर किया तो अभी उनके चार्जेस क्या हो जाएंगे नए वाले? ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +6. Now you can see manganese which was +7 is temporarily becoming manganese +6 by a process called charge transfer. ये कुछ रेजोनेंस के जैसा होता है. ये ऑक्सीजन देगा, फिर मैंगनीज उसको चार्ज रिटर्न करेगा, फिर ये ऑक्सीजन देगा, फिर मैंगनीज उसको रिटर्न करेगा, एंड सो ऑन विथ ऑल द 4 ऑक्सीजन. टर्न बाय टर्न मैंगनीज keeps on taking the +6 charge, +1 -1 charge from all of them. Is this understood perfectly well? सबके समझ में आ गया करेक्टली? अभी आप लोग थोड़ा पीछे जाके इस टेबल में देखो, +6 चार्ज के लिए क्या हो सकता है कलर. देखो ब्लूइश कलर आ रहा है यहाँ पे 3d6 के लिए. सो और या फिर आप इसके पहले वाला टेबल देखोगे 3d1 के लिए, 3d1 रादर 3d1 नॉट दैट वन, 3d1 इज पर्पल. देखो मैंगनीज था +7 मतलब 3d0 था. तो जब उसने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो बन गया 3d1. सो देखो कलर आ गया उसका पर्पल, वही कलर जो परमैंगनेट को आ रहा है. थियरी समझ में आ गया सब लोगों के? दिस इज कॉल्ड CT complexes, charge transfer complexes. So look at this entire answer what I discussed right now with you. This is a give reason question asked. They discovered it historically first for permanganate. बाद में उनको पता चला कि ये बहुत कॉमन फिनोमिना है और बाकी के फेमस कंपाउंड्स भी इसी तरह से हैं. क्रोमेट येलो, डाइक्रोमेट ऑरेंज, कॉपर ऑक्साइड ब्लू, निकेल DMG complex red in color. I have tried to use the same color boxes so that you remember it. वही सबके कलर्स हैं. All these are showing exactly same reasoning why they are colored despite they have very less electrons or no electrons. Those who want to take a screenshot of that summary, you can take it now. So what is DMG? Yeah, I'll give you that here.
This is a compound which forms a complex, coordinate complex with nickel plus 2, and its color is like rosy red color. They say आप अगर आ जाओगे लेबोरेटरी में तो आपको ये रिएक्शन करना भी है प्रैक्टिकल्स में. इनफैक्ट हम लोग ये कंपाउंड बनाते हैं लैब में आपके प्रैक्टिकल्स में. पता नहीं आपके बैच में भी प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा. Finally, the date of NEET has come this year, 12th of September. Students have gone totally पागल हो चुके हैं. इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं. इतने जन ने तो पढ़ाई बंद ही कर दी नीट वालों ने. Very few are continuing studying. चलो, we come to the next property. I think property wise this is the last one. फिर एक दो observation compounds है and then D block is over topic. आज खत्म कर देंगे D block. So अपना Wednesday और Friday lecture में we will continue with F block elements. F block दो lecture में हो जाएगा. Catalytic property. I think half the things I don't have to say also. Please read it. बहुत simple answers है. Major reason for catalytic property is presence of once again unpaired electrons. Now these elements as we know have half filled state या फिर incompletely filled d orbitals, so they can form good bonds with reactants, and that's why they can increase the speed of the reaction also. जो catalyst हम लोग commonly use करते हैं they are आयन, कोबाल्ट, निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, क्रोमियम. अभी हम लोग आपको एक टेबल है एक सिलेबस में, इसमें आपको सभी कैटलिस्ट कंपाउंड वाइज याद रखने हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस टेबल बाय हार्ट. दिस इज वन पार्ट ऑफ द टेबल and there is one more also. So you need to please remember these things. They ask very straightforward questions on this. So and so process, which is the catalyst used? Very easy. Let us do a little theory of the catalyst. हम लोग ने इसका chemical kinetics में भी detail किया था. Here what I'm showing you is like a mechanism of a catalyst. For example, if you take a reaction of iron plus 3, मतलब ferric, between that ferric and iodide ions, if you take persulfate ions, so Fe plus 3 acts like a catalyst. So reaction है ऐसे, iodide per sulfate produces iodine and sulfate. अभी ये रिएक्शन में आपको Fe+3 कैटलिस्ट कहीं नहीं दिखेगा, but when you see the mechanism of the reaction, you can see it is being used. Ferric reacts with iodide to form ferrous and iodine. This ferrous then reacts with persulfate and ferric is produced. अभी देखो आपका कैटलिस्ट था Fe+3 जो यहाँ पे कंज्यूम हुआ और नेक्स्ट स्टेप में फिर से रीजनरेट हो गया. That's why we always feel catalysts don't participate in reaction. They actually participate in reaction, but they are regenerated at the end of the process. That's all under catalyst. We have what is known as interstitial compounds. Now these interstitial compounds are somewhat like this. You can imagine there is a crystal lattice. मतलब कोई D block element है, वो ये एटम्स है, और उनके एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस आपको दिखेगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, वहां पे स्मॉल एटम को हम लोग ट्रैप करते हैं. यूजुअली ट्रैपिंग एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, एंड ऐसे जो कंपाउंड्स क्रिएट होंगे उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. डू नॉट कंफ्यूज देम विथ अलॉयज. दीज आर नॉट अलॉय. एलॉय में भी ऐसे ही थोड़ा होता है, लेकिन एलॉयज में ऐसे छोटे एटम्स नहीं होते. देयर आर बिग मेटल्स विच आर क्लब टुगेदर. तो इसके बाद हम लोग एलॉयज भी करेंगे, छोटा सा इंफॉर्मेशन है. सो लेट अस सी सम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर एज हार्ड एंड गुड कंडक्टर एज normal metals. Their chemical properties will be similar to the parent metal. Melting points are usually higher than the original element, but densities are little lesser than parent metal. These are
roughly the properties. Examples which are commonly used in chemistry. यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में आयरन इज द पेरेंट एलिमेंट, कार्बन एटम्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द वॉइड स्पेस, एम्प्टी स्पेस में. देखो सब एलिमेंट्स में ऐसा ही है, कार्बन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड सम मटेरियल इज क्रिएटेड फ्रॉम इट. जैसे हम लोग ने अभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स देखा, वैसे ही सेम एलॉयज देखते हैं. तो एलॉयज वी नो दैट दीज आर व्हेन टू मेटल्स आर मिक्स्ड इन द मोल्टन स्टेट एंड द प्रपोर्शन इज गोइंग टू बी डेफिनेट. ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली मिक्स किया, उनका एक प्रॉपर प्रपोर्शन रहेगा, रेशो रहेगा, उसी में एलॉय को प्रिपेयर करेंगे. लाइक कॉपर मिक्स्ड विथ जिंक एंड व्हाट वी प्रिपेयर इज कॉल्ड अ ब्रास एलॉय, राइट. सो प्रॉपर्टीज जो एलॉय की वजह से होते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट, ओरिजिनल मेटल के जैसा नहीं होता है. वी हैव टू डू नाउ सम टाइप्स ऑफ एलॉयज इन सिलेबस. आपने अगर सुना है कि दो जो स्टे हियर नियर खेतवाड़ी एरिया, खेतवाड़ी में एलॉयज का, मेटल का बहुत बड़ा मार्केट है. आप लोग कभी भी खेतवाड़ी के अंदर घूमोगे ना, तो खाली शॉप्स का जो बोर्ड है ऊपर का ना, वो रीड करो. आपको दो वर्ड्स वहां दिखेंगे, एक दिखेगा आपको फेरस और दूसरा दिखेगा नॉन फेरस. फेरस अलॉय, नॉन फेरस अलॉय. You can see this written on a board of metal shops also. That is our type, ferrous alloy. Ferrous alloy में obviously iron will have a little larger contribution, and these alloys percent of iron in the is more than any other metal. That's why they are called ferrous alloys. Example देखो, nickel steel, chromium steel, stainless steel. सभी स्टील में मेजर पहला एलिमेंट है Fe, और फिर बाकी के जैसे निकेल स्टील में निकेल रहेगा, आयन रहेगा और कार्बन रहेगा. कार्बन और Fe सब में कॉमन रहता है. तीसरा एलिमेंट के अकॉर्डिंगली नाम लिखा रहता है. यूजुअली जो परसेंट ऑफ कार्बन है वो बहुत कम होना चाहिए. जितना ज्यादा परसेंट कार्बन, उतना आपका स्टील ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटल स्टील. सेकंड, हाँ बोलो. Stainless steel has with स्टेनलेस other. स्टील में और है, करेंगे करेंगे, आ रहा है, आगे आ रहा है, एक सेकंड रुको. स्टेनलेस नाम का कोई एलिमेंट नहीं है. सो नॉन फेरस अलॉय में यू हैव ऑब्वियसली आयन प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट भी होता है, अगर रहेगा तो बहुत कम क्वांटिटी में. सो वी हैव ब्रास, कॉपर एंड जिंक. सो हियर वी हैव यूजेस ऑफ अलॉय. इसमें हम लोग अभी कॉम्पोजिशन करेंगे. सबसे पहले ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन. क्यूप्रा निकल alloy, copper and nickel. Go through this. Stainless steel, iron and carbon, no third element present. Nichrome, मोस्टली ये टाइटल्स ही ऐसे दिए हैं कि आपको एलिमेंट समझ में आ सकता है. देखो, लास्ट वन, टाइटेनियम अलॉय.